Welcome to Vanik live class meant for your A.S.O examination. We had already a discussion on the first class about the historical background and making of the constitution. This class we shall focus on preamble, parts and schedules. Just I will give a brief idea about it, then we shall start the questions. Preamble, parts and schedules. Parts and schedules. Preamble is like an introduction to the constitution. It gives us a brief idea about the constitution. It is like a mirror of the constitution. Preamble was adopted on 26th November 1949 on the last day, last part as the last portion of the constitution. It was the last to be adopted. However, preamble had its origin, preamble origin achi ba kouthre asichi objective resolution jota constituent assembly re 13 December 1946 dina move heitila and it was adopted on 22nd January 1947. It had a tremendous influence on preamble. That objective resolution was drafted by Jawaharlal Nehru. And what is preamble? What are the significance? Why preamble should be read, or why there is a preamble to the constitution? There are 4 reasons why preamble is there. First of all, preamble tells us the type of or the nature of the government we have in India. What type of government we have? What type of government we have? We have sovereign, socialist, secular, democratic republic. So sovereign, socialist, and democratic republic. Secular, democratic republic. This is the name of our government or a nature of government. Isn't it? But in 1950, these 2 words were not present. In 1950, the words socialist and secular were not present. So what was the status of Indian state? In 1950, it was sovereign democratic republic. And they tell us. So they tell us about the nature of government. Then it tells us about the philosophy of the constitution, the ideals. कौनटा मेन ऑब्जेक्टिव संविधान रो कौनटा मुख्य उद्देश्य संविधान रो जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टी फ्रैटर्निटी ये जो आइडियल्स गुरा अछि कॉन्स्टिट्यूशन रो ताकू भी प्रिएम्बल हमकु दर्शाउछि. It tells us about the what? It tells us about the date of adoption of the constitution. When was constitution adopted? On 26 November 1949, and 26 November is observed as National Constitution Day for that reason. जातीय संविधान दिवस 26 नवेम्बर रे पालित होउछि कारण एई दिन 26 नवेम्बर दिन संविधान गृहीत होइतला. And last but not the least, preamble tells us about the ultimate source of power in our country. Who gives power? Who is the ultimate source of power? The people of India are the ultimate source of power in the country. So preamble gives us 4 ideas. Okay? Then preamble has been amended also once in 1976. Preamble re bahut sara jinso achi joda ki हमको जानिया पड़े with the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunities by promoting among them all fraternity, by assuring dignity of individual,
and unity and integrity of the country, of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. This is the language or wordings, these are the wordings used in the preamble. So we don't have the time or the scope to explain all these things, try to have an understanding on each word. For example, sovereign means supremely independent, liberty means absence of restraint, equality means absence of privileges. So एमती type of question बहुत समय आसीबो कि इक्वालिटी माने कौन, sovereignty माने कौन, socialist माने कौन. Socialist माने ownership of the country, ownership of the state ownership. But India doesn't have pure socialism. It has your said to say it has your democratic socialism. Term गुरा बहुत समय question रे important थाए. तो term गुरा टी मन रखिबो, that is very important. So I tell you कि liberty means absence of restraint, equality means absence of special privileges for any category, fraternity means common brotherhoodness. So ये जो term गुरा रही ची माने हमरो जमती गोटे term को हमें देखिबा कि हमरो sovereign हला sovereign. So ये गुरा टी खाली exam oriented मन रखिबो. Sovereign means supremely independent. प्राय ऑप्शन रे इटा थिबो supremely independent or independent, non interference by foreign countries. सेमती sovereignty by socialist means socialist means state ownership of means of production. But India has democratic socialism. Secularism means secularism, but secular means neutral in religion, religious matter, neutrality, but neutral in religion. Short टिके जानिया दरकार जोटा कि ऑप्शन में थिबो. Okay, and republic means head of the state is directly elected. Head of the state is elected, not directly elected, not necessary, is elected. So likewise you can say that liberty means absence of restraint. Okay. Santi equality means absence of privileges. So most of the question आमे जोड़ा देखुचे सेटा प्राय ए ऑप्शन सब रहुची. तेणु एगुरा टिके मन रखिबो जो वर्ड रे ऊपरे कोन क्वेश्चन नहीं पारे, absence of privileges, absence of restraint, एगुरा सब टिके नजर रे आनिबो. ठीक अछि. And then preamble जोटा जो बेसिक जो ऑर्डर गुरा सब अछि तार जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ए तीनटा रहउची. लिबर्टी रे पांचटा रहउची. थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप रहउची. तो गुरा से देखिबो. बाकी तार वर्डिंग रे ऑर्डर गुरा टी रहिबो जेमति सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से ऑर्डर रे रहिबो. एवं मु कहिली कि 1950 रे इंडियन स्टेट रो नेचर थिला सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. परे 1976 रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड टी को ऐड कराइछ. एराटी मन रखियो. बाकी प्रिएम्बल गोटे पार्ट कि नाही सेटा संवैधानिक घोषणानामा आइतिला. संवैधानिक घोषणानामा आइतिला. प्रिएम्बल गोटे पार्ट्स कि नाही, किंतु सेटा सुप्रीम कोर्ट रे विचार करा जाइतिला. तीनोटी केस रिलेटेड अछि प्रिएम्बल को, जोटा हमें जानिथिबा यदि क्लास अटेंड करथिबा ताले बेरुबारी केस 1960 रे प्रिएम्बल एक पार्ट नुहे बेली संविधान रे सुप्रीम कोर्ट कहला. प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट. तापरे केशवानंद भारती केस रे 1973 रे कहला प्रिएम्बल गोटे पार्ट बेली. एवं तापरे 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे 1976 रे प्रिएम्बल को चेंज करा गला. अमेंड करिकि तीनोटी शब्द एंटर करा गला. गोटे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी.
तापरे LIC ऑफ इंडिया केस एथिरे केशवानंद भारती कथाटा को दोहराइले सुप्रीम कोर्ट 1995 रे कहले प्रिएम्बल गोटे इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बस ए तीनटा केस टी मन रखिबो वर्तमान प्रिएम्बल जदियो फिजिकली नॉट प्रेजेंट इन द पार्ट बट इट इज कंसीडर्ड ए पार्ट बाकी प्रिएम्बल को टी मन रखिबो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया तेणु तार गोटे महत्व अच्छी एवं कौन भाइबा बस हो कौन ये जदि प्रिएम्बल कथा पचरा जाए ताले आम प्रिएम्बल को उच्चारित करवा दरकार प्रिएम्बल को रेसाइट करवा दरकार ओके दीज आर द थिंग्स प्रिएम्बल एवं प्रिएम्बल वाज अडॉप्टेड लास्ट at the end of the constitution every part was adopted then preamble was adopted on 26 November 1949 boli data douchi so these are the things remember so all these questions can be expected from preamble now coming to the parts of the Indian constitution parts upare to ame time nahi am par विशेष करी तो मु खाली brief idea देबी कि parts गुड़ा सबू स्टेट बा पॉलिटिकल एसोसिएशन स्टेट गोटे कौन जोटा कहूँ आम इंडिया इज ए स्टेट ये कहूँ इंडिया गोटे पॉलिटिकल एसोसिएशन से चारोटी एलिमेंट दरकार स्टेट रे गोटे पॉपुलेशन गोटे टेरिटोरी गोटे सॉवरेनिटी आ गोटे गवर्नमेंट से इंडिया को आम स्टेट कहीपर पॉलिटिकल लेक्सिकन रे किंतु ओडिशा इज नॉट ए स्टेट बिकॉज ओडिशा लैक्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी तो इंडिया गोटे जेहेतु स्टेट गोटे एसोसिएशन तेणु एसोसिएशन गढ़िया जहाँ जहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट अच्छी आमर टेरिटोरी है पॉपुलेशन है एगुरा सबू सेगुरा सबू फास्ट रही तेणु फास्ट पार्ट रे यूनियन टेरिटोरी रहा सेकेंड पार्ट रे सिटीजनशिप रहा थर्ड पार्ट रे फंडामेंटल राइट्स रहा फोर्थ पार्ट रे DPSP रहा कि 4A रे फंडामेंटल ड्यूटी रहा एवं 4-5 रे यूनियन गवर्नमेंट रहा 6 रे स्टेट गवर्नमेंट रहा 7 टा अबोलिश हो 7 रे गोटे प्रिंसली स्टेट गुरा थिले ग्रुप बी स्टेट पार्ट जो क्लास जोटा पार्ट बी स्टेट जो थिला सेटा अबोलिश हो 7th अमेंडमेंट रे 8 रे यूनियन टेरिटोरी रहा आउ 9 रे पंचायत राज रहा IXA रे म्युनिसिपालिटी रहा IXB रे कोऑपरेटिव सोसाइटी रहा X रे शेड्यूल्ड एरिया रहा एवं पार्ट 11, 12 और 13 जोटा रहा 11 रे रहा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स और 12 रे रहा फाइनेंशियल रिलेशंस और 13 रे रहा इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स 14 रे रहा यूनियन एंड स्टेट सर्विसेज से UPSC और OPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन कथा कहई किंतु जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन कथा कह जाए कौथे आमर पार्ट 14 रे केवल दीटा पार्ट कथा कहई जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन पार्लियामेंट गोटे एक्ट अंडर रे तैयारी करता है तापरे 15 रे तो इलेक्शन रहा 16 रे सेवरल स्टेट सेवरल क्लासेस जो अच्छी वीकर सेक्शन SC ST OBC मान प्रोविजन रहा 17 रे आमर 3 प्रकार लैंग्वेज कथा रहा 17 रे जो रहा यूनियन लैंग्वेज स्टेट लैंग्वेज और कोर्ट लैंग्वेज एवं विभिन्न लैंग्वेजेस गुरा एवं लैंग्वेज कमिशन जो लिंग्विस्टिक कमिशन रहा माइनॉरिटी प्रोटेक्शन 350B रे से सब से पार्ट रे अच्छी 18 रे रहा इमरजेंसी 19 रे रहा मिसलेनियस पार्ट विभिन्न लीगल पार्ट रही एवं 20 रे रहा अमेंडमेंट 21 रे रहा तुम्हारा जो स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टन स्टेट्स लाइक 371 रे रहा आमर महाराष्ट्र गुजरात रहा कि ए रे आंध्र प्रदेश बी रे एमती सब बहुत सारा स्टेट प्रोविजन्स गुरा सब अच्छे एफ रे सिक्किम रहा ओके तो एगुरा सब आम टी देखा पड़ो एवं 22 रे ताको रिसाइकल बिन भी कह जाए से सब रिपिल्स गुरा अच्छी रिपिल्स जहाँ जहाँ अबोलिश होथोरिटेटिव टैक्स सो पार्ट्स गुरा सब हापाजारली अरेंज करा जाएनी तार गोटे बेसिक क्राइटेरिया भी अच्छी बेसिक नीड्स बेसिक लॉजिक भी अच्छी कौन कौन सब करा जाई परिबो तेणु ताकू टिके बुझिले आमे पार्ट्स को आराम से धरी परिबा पार्ट्स रो विशेषत्व जानी परिबा ओके सो दैट इज द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर तो हमर जोटा रहिला मु कहली 370 आर्टिकल रे रहितला कोन
जम्मू काश्मीर पे जोटा को एबे स्क्रैपिंग कराई बा अबोलिश कराई 2019 रे जम्मू काश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बड़े एवं 35A जो आर्टिकलटा थिला ताकू भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रे अबोलिश कर दिया जाइछि 371 रे बहुत सारा स्टेट अच्छी 9-10 स्टेट अच्छे स्पेशल प्रोविजन अच्छी एवं सेगुड़ा सब माइंड रे रखा पड़ो से क्वेश्चन बेस करुच्ची बाकी जेहेतु पार्ट्स अच्छी तार रिलेटेड प्रोविजन गुरा द्वारा पड़ो कि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को पार्ट्स रु आसूची पार्ट इलेक्शन जो अच्छी से आसो पार्ट 15 रु ओके यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन को पार्ट डील होची पार्ट 14 रे डील होची आउट XIBA पार्ट भी अच्छी ट्रिब्यूनल्स रे दी प्रकार ट्रिब्यूनल्स रही गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गोटे अदर ट्रिब्यूनल्स 323A 323B तेणु एगुरा सब देखा दरकार प्लस लैंग्वेज कथा कहली आमेंडमेंट सेमती इमरजेंसी अच्छी 18 रे इमरजेंसी अच्छी आउ 19 रे मिसलेनियस रहा 20 रे आमेंडमेंट रहा तेणु दीज आर द पार्ट्स को मन रखा बहुत इजी जदि आम स्टेट को बुझा पॉलिटिकली जदि बुझा स्ट्रक्चर को जे कौन पाई फास्ट पार्ट रे यूनियन टेरिटरी रही तेणु फंडामेंटल पार्ट गुरा आग रही तापर सब मिसल डिफरेंट पार्ट सब रही डील करी धीरे धीरे जाऊँगी सब आग सब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सरीगला लोकल गवर्नमेंट सरीगला यूनियन टेरिटरी सरीगला तापर पंचायत राज म्युनिसिपालिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी माने आडले माने ग्रासरूट लेवल इंस्टीट्यूशन गुरा तापर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप आसीगला पार्ट 11-12 रे तापर 13 रे इंटर स्टेट ट्रेड एंड कमर्स रे तो अति सुंदर भाव रे अति गोटे अति सुंदर मैनर रे सेटा को साइज ऑर्डर रे रखा जाइछि तेणु से ऑर्डर टाक जदि आम बुझीजा ताले पार्ट्स आम ज्ञातसार रहिबो आमे ताको मेमोराइज करि परिबा सेतरे किछि असुविधा हबनी तेणु तापर ध्यान दब तापर रहिला तुमरो शेड्यूल्स गुरा भी गोटे लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट टेल्स अस ब्रीफली अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल हो पार्ट्स हो they are not enforceable they are not source of power schedules of parts are not source of power they only give us some that is a portion of the constitution but they are not source of power articles are source of power articles we get power from articles तेणु से बहुत समय क्वेश्चन भी थाए which of the following is a source of power articles because articles through suppose I have a right to speak or right to speech and expression से गोटे आर्टिकल अच्छी 19(1)A रे अच्छी सेमती राइट टू एजुकेशन दर है 21(A) रे अच्छी सेमती राइट टू भोट है दर आर्टिकल 327 दे आर व्हाट दीज आर पावर्स तेणु पावर्स बा अथॉरिटी इज नॉट फाउंड इन पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ओनली आर्टिकल्स गिव्स अस अथॉरिटी एंड पावर्स दैट इज टू बी रिमेम्बर्ड आल्सो ओके एंड शेड्यूल्स है दर फास्ट शेड्यूल्स रे हमें कहूचे कौन यूनियन एंड नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रहा से सब जाक ना रहा जिते यूनियन टेरिटरी 28टा स्टेट आउ 8टा यूनियन टेरिटरी से ना रहा जिते बड़े नुआ स्टेट या से शेड्यूलटा आमेंड हुए तेणु से बेसिक आइडिया भी रखा दरकार केतबे कौ शेड्यूल आमेंड हम से भी गोटे क्वेश्चन एरिया थाए देन शेड्यूल 2 रे हमर सब सैलरीज रहा से कन्फर्म हम कहार सैलरी अच्छी बहुत समय कन्फ्यूजन आसे तेणु सेगुरा सब प्रेसिडेंट है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तेणु वाइस प्रेसिडेंट नेम इज नॉट मेंशन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर ऑफ विधानसभा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ विधानसभा चेयरमैन ऑफ विधान परिषद डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ विधान परिषद देन योर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑल दिस राइट्स okay so that is only constitutional body हिसाब रे कोर्ट आउ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कथा रही सेकेंड शेड्यूल सैलरी गुरा नॉन वोटेबल सैलरी यूजुअली से माने नॉन वोटेबल सैलरी से सैलरी गुरा पार्लियामेंट रिड्यूस करि पारेनी बजट समय तो से गोटे आइडिया नब थर्ड रे सब थर्ड शेड्यूल ले ओथ अफर्मेशन गुरा अच्छी ओथ है जो माने ओथ्स अफर्मेशन ने कि अफर्मेशन जो नास्तिक लोक अफर्मेशन नियंती तो ओथ्स एंड अफर्मेशन समस्त रही मिनिस्टर हो गवर्नर हो जेकोसी व्यक्ति सब जहाँ जहाँ सब
कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस अच्छी पब्लिक ऑफिस हायर ऑफिसर्स गुरा से ओथ रही एवं थर्ड फोर्थ शेड्यूल रे राज्यसभा रे सीट्स गुरा अच्छी राज्यसभा सीट्स गुरा सो आलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स डिफरेंट स्टेट रो डिफरेंट सब स्टेट रो कौन कौन सब राज्यसभा केतेटा सीट रही राज्यसभा से सब फोर्थ शेड्यूल रे देछि ओडिसा रो 10 सीट्स अच्छी उत्तर प्रदेश रो 31 अच्छी एमती बहुत सारा स्टेट रो सब मेंशन है सब स्टेट रो राज्यसभा सीट्स केवल स्टेट रो राज्यसभा सीट रहुची बोली कह जाउछि so that is the election that is the allocation of seats fourth schedule fifth schedule रे scheduled area in several states रे अच्छी बा जो फुली ट्राइबल स्टेट छाड़ी के अन्य स्टेट है हमर ओडिशा अच्छी झारखंड अच्छी हिमाचल प्रदेश अच्छी राजस्थान अच्छी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अच्छी आंध्र तेलंगाना अच्छी महाराष्ट्र गुजरात अच्छी तो एमती पाखापाखि 10टी स्टेट फिफ्थ शेड्यूल अच्छा से माने फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन टी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन से जेहेतु ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया गुरा तेणु से गोटे स्वतंत्र शैली प्रशासन व्यवस्था लागू करा जाइए सो दैट ट्राइबल कल्चर ट्राइबल वे ऑफ लाइफ जमी प्रिजर्व हम एवं तांकर कोनोसी क्षति माने कल्चर रे बा ट्राइबल कल्चर रे ट्राइबल वे ऑफ लाइफ रे किछि जंती किछि असुविधा न हबो हेंदी सिक्स शेड्यूल ले भी ट्राइबल एरिया अच्छी एटीएम आसाम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम चारोटी स्टेट रो ट्राइबल एरिया अच्छी और लार्जर डोमिनेंट स्टेट गुरा ट्राइबल डोमिनेंट स्टेट गुरा तो एथिरे सब रही मिजोरम रे पाखापाखि एवं 95% पॉपुलेशन ट्राइब्स बोली कह जाए परसेंटेज वाइज मिजोरम टा अधिका ट्राइबल पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश रे अधिका ट्राइबल अच्छा तेणु सिक्स शेड्यूल डील्स विथ ट्राइबल एरियाज इन 4 स्टेट्स सेवेन शेड्यूल डिविजन ऑफ पावर रही है सब लिस्ट गुरा देखा यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट आम क्लास रे पिला लिस्ट दौ सब लिस्ट रे सब कौन कौन इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स रही सेगुरा टिके भल भाव देखा दरकार अवश्य से क्वेश्चन गुरा मुझे इनक्लूड करनी सेटा मु यूनियन एंड जो सालिएंट फीचर क्लास रे सेगुरा सब एंट्री गुरा देवी से सब आम देखा कौन कौन लिस्ट रे जोरा इंपोर्टेंट रहिबो सेगुरा मु परीक्षा ओरिएंटेड करिकी सेटा सब सालिएंट फीचर क्लास रे सेटा से क्वेश्चन आंसर गुरा डिस्कशन करदेवी तुमको बहुत सारा क्वेश्चन आनी आज पार्ट्स एंड शेड्यूल उपर अधिक क्वेश्चन कर देछि ओके सेगुरा देखिबो एवं जोरा प्रोबेबल हो परिबो सेटा मु देछि तो यूनियन लिस्ट रे वर्तमान कहउचंदी 98 अच्छी आउ स्टेट लिस्ट रे वर्तमान 59 अच्छी आउ कनकरेंट लिस्ट रे 52 अच्छी आफ्टर जीएसटी हैला परे सब चेंज हेछि बेली बहुत सारा बही रे बुक्स रे अपडेट अच्छी आसीछि तेन सेटा नेक्स्ट 8 शेड्यूल लैंग्वेज अच्छी डिफरेंट लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस अच्छी एवं आज यू नो कि ओरिजिनली देयर वर नॉट 22 लैंग्वेजेस देयर वर 14 लैंग्वेजेस गुरा सब आमर मेंशन होइतिला एवं परे 21st आउ 71st आउ 92nd अमेंडमेंट रे गुरा सब एंट्री होइछि 8टी लैंग्वेज तेणु वर्तमान 22 लैंग्वेजेस आर प्रेजेंट इन द 8th शेड्यूल they are the official language of the states and or of the country एवं से लैंग्वेज एंट्री हेले अमेंडमेंट स्पेशल अमेंडमेंट रे हम 368 अंडर रे कोनोसी भाषा को जदि 8th शेड्यूल अंतर्भुक्त करा जाए तार से स्पेशल अमेंडमेंट पार्लियामेंट रे ही एंट्री हम 9th शेड्यूल टा नथिला कॉन्स्टिट्यूशन रे ओरिजिनली तो एंट्री छि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 रे से लैंड रिफॉर्म्स एबोलिशन ऑफ जमींदारी एंड अदर प्रोविजंस कह जाए 294 प्रोविजन्स रही बोली कह जाए तो सेगुरा 9th शेड्यूल टा जुडिशियली रिव्यूएबल नथिला 9th शेड्यूल जहाँ जहाँ प्रोविजन ताकू जुडिशियरी जुडिशियल रिव्यू पावर रु बाहर रखाइला किंतु एप्रिल 24 1973 पर जेकोसी एक्ट 9th शेड्यूल एंट्री हम सीटा जुडिशियली रिव्यू हम बोली केशवानंद भारती केस 1973 रे सुप्रीम कोर्ट कही तो परवर्ती केस भी तापर भी कही तो 10th शेड्यूल टा एंटी डिफेक्शन एक्ट थिला 10th शेड्यूल आगुरु थरे अमेंड होइतिला सिक्किम पई गोटे ऐड होइतिला किंतु सेटा 36 अमेंडमेंट रे ताको अबोलिश कर दिया जाइतिला परे सेटा पुणी 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 रे 10th शेड्यूल ऐड हला पिला माने 10th शेड्यूल रे एंटी डिफेक्शन लॉज गुरा अछि मेंबर माने जो दल त्याग करती दल परित्याग करी अन्य दल को पलांती सरकार अस्थिरता देखा जाए से 10th शेड्यूल रे
एंटी डिफेक्शन एक्ट कराई जहाँ बल मेंबर माने जदि दल परित्याग कले दंडनीय अपराध बा मेंबरशिप रू बाहर कर दिया जाई पारे 11 शेड्यूल रे पंचायत राज अच्छी एटा 73rd अमेंडमेंट रे आड होता है पंचायत लिस्ट अच्छी 29 सब्जेक्ट्स उपर पंचायत माने लॉ करि परिबे से सब विचार करा जाइछि एवं सेटा 11 शेड्यूल अच्छी से लिस्ट शेड्यूल गुराटी देखिबो एवं से शेड्यूल रे कौन कौन गुरुत्व रही सेटा टिके नजर करिवो ओके बाकी तुमर 8 शेड्यूल जो 12 शेड्यूल रे विभिन्न प्रकार अच्छी हमर कोन विभिन्न प्रकार सब म्युनिसिपालिटी लिस्ट रही जोटा कि अर्बन लोकल बॉडीज कौन कौन सब पावर अच्छी से कहा उपरे सब प्रोविजन तैयारी करि परिबे कहा उपरे सब ये करि परिबे सेगुरा सब 12 शेड्यूल रही ताको आमे कहबा म्युनिसिपालिटी लिस्ट ओके म्युनिसिपालिटी लिस्ट कहबा तेणु म्युनिसिपालिटी लिस्ट रे बहुत सारा जिनस रोचे जोटा आमे देखि परिबा तेणु एइजा होची गोटे ब्रीफ आइडिया तेणु ए सब उपरे फंडामेंटल क्वेश्चन कंपलसरी आसीबो ए सब उपरे फंडामेंटल क्वेश्चन कंपलसरी आसीबो ताको टिके आमे नजर अंदाज करबानी कारण पार्ट शेड्यूलटा कन्स्टांट जिनसटा सेटा उपरे क्वेश्चन जेमतेले आसीबो प्रीएम्बुल उपरे आमे 4-5 रु 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करि परिबा ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीफ आइडिया मु तुमको देली एबे आमे किछटा क्वेश्चन आंसर तैयारी करिबा जोटा तुम पई उपयोगी हबो Okay, so your idea is state list और यूनियन लिस्ट पर बहुत पिला लिखी देइछ बट सेटा अपडेट है जीएस पर देखिबा सेटा भलो बारे जदि भूल थाई पारे सेटा भलो बाटी देखिबो ठीक अछि तो हमें किछि क्वेश्चन आड़ को जिबा क्वेश्चन ऊपर देखिबा कोन कोन क्वेश्चन हमें देखिबा तो क्वेश्चन तो हमें अजी किछिटा क्वेश्चन देखिबा प्रथम क्वेश्चन अच्छी ओके इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू क्वेश्चंस इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू यस ओके so we shall start discussion now the present nomenclature of the preamble to Indian Constitution is sovereign केमती ऑर्डर रहिबो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो मु कहली कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्डटा जो माने टिके न्यू अच्छता पई मु एम्फासाइज करूची जो माने हमरो पॉलिटी स्टूडेंट थिलो बा पढिथिलो सेटा तो अलग कथा बट जो माने न्यू अच्छ से माने गुटे आइडिया दउची मु कि सॉवरेन सोशलिस्ट वर्डटा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे एटा आड होइतला एवं मु कहली सोशलिस्ट माने कौन सेकुलर माने कौन प्रति वर्ड रो किंतु मु आउटे क्वेश्चन कहूची जोटा तुमके मन रखिबो कि जदि पचरिबो क्वेश्चन द नोमेनक्लेचर माने नामकरण नोमेनक्लेचर ऑफ इंडियन स्टेट इन 1950 और व्हाट वाज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इन 1950 ताल तुमे आंसर करिबो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओके रिपब्लिक माने हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड तेन सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक करिवो जदि सेटा एबे पचरिबो प्रेजेंट रे कोन अछि ताले एटा हो ठीक अछि ऑलराइट तो आंसर इज डी
preamble of Indian Constitution was passed as objective resolution in the Constituent Assembly on 22nd January 1947. 22nd January 1947 रे जोटा कि मूव होइतिला 13 December 1946 रे से जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे प्रिएम्बल रे ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन हबो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन सेटा नेहरू लिखथिले एवं ताकू आधार करी प्रिएम्बल रो लैंग्वेज तैयार हेतला ओके तेणु सेटा हम एमती कहि परिबा कि प्रिएम्बल वाज पास्ड एज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन and it was adopted by the honorable assembly constituent assembly on 22nd January 1947 the in which judgment Supreme Court it is said preamble is the part of the constitution plan part hele amend hi paribo part hobar justification kahi ki asila question ta preamble le jodi kichi amend kariya ku chahiba ताले प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन रा गोटे पार्ट ऑफ स्टेटस दवा पड़िबो बट कीप इन मेमोरी दैट प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट आउट ऑफ द 25 पार्ट्स टुडे वी हैव 25 पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन 25 पार्ट्स 22 लास्ट बट देयर आर सम पार्ट्स हैव बीन एडेड सो टुगेदर we have 25 parts but preamble is not one among the 25 parts then it is given or accorded the status of a part by the Supreme Court. So seita consider karala ketobale jetobale judiciary involvement kala judiciary declare kala ko case re na Kesavananda Bharati case re 1973 re Golok case re declare kala ki preamble is a part of the constitution एवं ता परे 42nd amendment ताको amend कराइछ एबे preamble भी amend ही परिबो किंतु preamble मात्र थरे amend हिछ so preamble is given the status of a part not exactly a part of that constitution एवं अन्य केस गुराटी नियो 1967 रे गोलोकनाथ केस एरा सब फंडामेंटल राइट रिलेटेड केस मिनर्वा मिल केस 1980 बेरुवारी केस 1960 First schedule of the Indian Constitution deals with names of state and union territories. Names. What is first schedule all about? First schedule is all about names of union states and union territories. Got it? So take the answer easily. Okay. So now we shall move to question number 5. Which schedule of Indian Constitution deals with oath or affirmation of high officials of the government of India or government? Which schedule deals with oath or affirmation? ओथ और अफर्मेशन मजरे डिफरेंस होची ओथ टा सब लोक नियंती प्राय किंतु अफर्मेशन टा नास्तिक लोक नियंती बोली कहा जाए तो सेटा थर्ड शेड्यूल ले अछि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओथ्स तो आंसर सी द इंस्पिरेशन फ्रॉम लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रांस सी नहीं की एवं फ्रेंच रिवोल्यूशन केबे हितला फ्रेंच रिवोल्यूशन नो हम इंस्पायर करछे
फ्रेंच रिवोल्यूशन रूसो मॉन्टेस्क्यू वोल्टेयर तंग राइटिंग्स रे लिखिले एवं फ्रेंच रिवोल्यूशन पीरियड केते 1789 रु 1799 पर्यंत फ्रेंच रिवोल्यूशन चलथिला ओके सही समय रे लिबर्टी इक्वालिटी जोटा रही आमर फ्रैटर्निटी ए तीनोटी शब्द परिचित है वर्ल्ड रे समस्ते जानिया पाइले कि आमर ये सब अधिकार अच्छी आम समान आम स्वाधीन आम भितर कॉमन ब्रदरहुड रहा दरकार कॉमन लोक भितर ये सब जिनस समस्ते जानी पारे तो से फ्रेंच रिवोल्यूशन मन रखी था 1789 रु 99 बोली जना पड़ुछि ओके 16 लुई देन allocation of seats of Rajya Sabha from the states and union territories mentioned under which schedule of Indian constitutions, that is 4th schedule. So not only states but also some union territories have seats in the Rajya Sabha. So how many union territories will have the seats in Rajya Sabha? Those who have legislative assemblies. How many union territories have legislative assemblies in India today? There are 3 union territories. हमें कहवा पुडुचेरी दिल्ली और जम्मू काश्मीर भी कही परिवा जम्मू काश्मीर एबे भाग नहीं परिवो कारण सेटा यूनियन टेरिटरी हैला किंतु तार गोटे लेजिस्लेटिव असेंबली अछि सो सेति पय लिखा होला कि एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज Union territories can send their members to Rajya Sabha only when they have legislative assemblies. So fourth schedule deals with not only about 28 states but also about 3 union territories. How many members they have today? Odisha has 10 members. 10 members they are elected, so that is called allocation of seats. सो ये गोटे कथा माइंड रखा दरकार जिते नुआ स्टेट फॉर्मेशन हम इंडिया रे जिते न्यू स्टेट फॉर्मेशन हम से फर्स्ट शेड्यूल और 4th शेड्यूल गॉट अमेंडेड ओके दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड नंबर 8 द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइंड ऑफ द मीन्स व्हाट डिड दे वांट से माने कौन चाहूतिले कौन आदर्श संविधान रे स्थापन करिया को चाहूतिले कोनटा दरकार थिला संविधान रो उद्देश्य कोन एवं से माने कोन चाहूतिले जे कोन संविधान द्वारा कोन प्रतिष्ठा हबो किपरि एक राष्ट्र गठन हबो एते वर्षर जो कॉलोनियल रूल अंडर रे रही की विदेशी शासन अंडर रे रही की पुन से मानु कोन दिया जाई परिबो तो सेटा होची सेटा मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रो मुंडरे कोन थिला सेटा हमें कोठु जानि परिबा सेटा हमें प्रीएम्बल लो जानि परिबा प्रीएम्बल को सेति पई कोन कुआ जाय रे मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिरर इट रिफ्लेक्ट्स द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस सब आंसर हम लिखिले यस Okay, Pilone. So now we shall move to question number 9. Question number 9. Okay. So which of the following objectives is not embodied in the preamble to the Constitution of India? Which of the following objectives? Okay. So liberty of thought is mentioned. Thought. How can go? Thought. Expression, belief, faith, and worship and worship. ତେଣୁ
एटी लिबर्टी ऑफ थॉट अच्छी, इकोनॉमिक लिबर्टी इज नॉट देयर, सो आंसर इज बी. Question number 9, answer is B. Economic liberty is not mentioned in there. Only liberty of thought is there, liberty of expression is there, liberty of belief. The liberty means कौन कहती? Absence of restraints. Okay, so there are 5 kinds: thought, expression, belief, faith, and worship. Worship. Which of the following is correct? Preamble of the Constitution is a part of the Constitution and it can be made under Article 368. Preamble of the Constitution is not a part of the Constitution, cannot be amended. Preamble is the part of the basic structure of the Constitution, can be amended only if no change in the basic structure is made. Plan एटा basic correct होबो कारण ए जो basic structure कथाटा केशवानंद भारती केस रे सुप्रीम कोर्ट एटा को इवॉल्व करथिला. बेसिक स्ट्रक्चर माने संविधान रो एमती किछि अंश अछि बा एमती किछि प्रोविजन अछि जाहाकू अबोलिश करियबनी बाय मीन्स ऑफ अमेंडमेंट. कारण अमेंडमेंट करी तो सरकार पार्लियामेंट सब भी करि परिबो, किंतु किछिटा बेसिक स्ट्रक्चर अछि से बेसिक स्ट्रक्चर को से वायोलेट करिबनी, की भी करि परिबो. तेणु प्रिएम्बल भी गोटे बेसिक स्ट्रक्चर. प्रिएम्बल को अमेंड करहब जदि कौन बेसिक स्ट्रक्चर वायोलेट न हो. से आंसर फंडामेंटल आंसर आम कर 10 नंबर आंसर हम सी. ओके, काइंडली टेक ए नोट ऑफ दिस. Okay, so you are participating in a fine way. Okay, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट करुच. ओके, बहुत बढ़िया नॉलेज भी अच्छी. ओके, ठीक अच्छी, बढ़िया कथा. तो नाउ नंबर 10 सी, नंबर 11 को जीवा. In which of the following constitutional cases the Supreme Court gave a ruling that preamble is a part of the Constitution? Okay, preamble गोटे पार्ट बोली सुप्रीम कोर्ट कहीं कहला. कौन पे कहबार यथार्थता कौन ना प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे पार्ट नथिला. प्रिएम्बल रे संविधान को पार्ट हिसाब रे न्याय नथिला. तेणु सुप्रीम कोर्ट रो इंटरफेरेंस जोगु प्रिएम्बल को पार्ट हिसाब रे कंसीडर कराला. को केस रे that is your B, केशवानंद भारती केस 1973. एवं एइथरे मन रखिता बेसिक स्ट्रक्चर कथाटा कहैतला. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बा थ्योरी डॉक्ट्राइन एटा इवॉल्व होइतला केशवानंद भारती केस रे. ओके, नेक्स्ट. India has adopted communistic socialism, Marxian socialism, democratic socialism, pure socialism. Socialism रो अर्थ मु कहूतली. Socialism रो अर्थ हला ओनरशिप ऑफ द स्टेट. जेतबे सरकार सब जिनसर मालिक हुए सेटा सोशलिस्ट कंट्री कुआ जाए. तो इंडिया रे उभय जिनस अछि. गवर्नमेंट ओनरशिप अछि, प्राइवेट ओनरशिप भी अछि. प्राइवेट कंपनी अच्छी, गवर्नमेंट कंपनी भी अच्छी. तेणु से आमर जो टिपिकल सोशलिज्म अच्छी से ना हूँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. सी, आंसर सी हम. आंसर सी माने सेटा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आम कहबा. एवं कैरेक्टराइज्ड बाय मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी माने इंटरप्ले और कोएग्जिस्टेंस ऑफ
both private sector and public sector. Then India has adopted democratic socialism. We do not have Marxian socialism or communist communist socialism. And socialism or socialistic principles are mentioned in DPSP mostly. Okay, now we shall move to the question number 13. Kindly take a notice of first last question. The Constitution of India originally contained in 1950. Polity re original question mane 1950 कथा से पचाच. तो originally हमारा 395 articles, 22 parts, 8 schedules थिला. तो नईटा आंसर है जीवो A. Question number 13. Answer is A. So kindly take a notice of these answers. Question number 11, answer is B. Okay, so now we'll move to question number 13 gala 14. Which of the following is not correct? Part XIBA was added by 42nd Amendment Act. Yes, 42nd Amendment को mini constitution भी कहा जाए. बड़ा कथा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एटार एथि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए सब्सटेंशियली चेंज होता कॉन्स्टिट्यूशन विशेषकर दुईटा पार्ट एंट्री होता एकाथर गोटे आईबीए गोटे एक्सआईबीए आड होता 50 खंडे आर्टिकल्स आमेंड होता जुडिशियल रिव्यू उपरे बहुत प्रकार चेंज होता एवं केशवानंद भारती केस रे जोटा थिला जोटा हमर चैलेंज कराइतला जुडिशियल रिव्यू पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर एब्सोल्यूट बोली कहला लोकसभा टर्म को 6 ईयर जाए बढ़े दिया जाइतला तो बहुत समय हमर क्वेश्चन आसे कि को अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए तो सेही जो 42nd अमेंडमेंट रे एक्सआईबी ए आडला इट डील्स विथ ट्रिब्यूनल एंड फैमिली कोर्ट्स सेटा भूल अछि फैमिली कोर्ट्स 1984 फैमिली कोर्ट एक्ट उठे कराई 1984 फैमिली कोर्ट उठे भी जुडिशियल बॉडी एंड दे आर सम ट्रेडिशनल कोर्ट रो बाहर से मन को तैयारी करा जाए जमती लोक अदालत हैला सेमती फैमिली कोर्ट्स 1984 एक्ट अंडर रे फैमिली कोर्ट्स तैयारी करा जाए ओडिसा रे भी फैमिली कोर्ट्स अछि एवं फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट रा रिजोल्यूशन पे तम कराई किंतु एक्सआईबीए रे सेटा पार्ट कर रहा कारण दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तेणु आंसर आमे बी करिबा फास्ट बिकॉज दिस पार्ट इज नॉट करेक्ट इट कवर्स आर्टिकल 323A 323B सेटा ठीक अछि इट डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्रिब्यूनल सेटा भी ठीक अछि 323A रे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अच्छी 323B रे अदर ट्रिब्यूनल्स गुरा काम कर टैक्स ट्रिब्यूनल है एग्रीकल्चरल ट्रिब्यूनल है रेंट ट्रिब्यूनल है जो आमर अच्छी कौन टेनासी ट्रिब्यूनल है बहुत सारा ट्रिब्यूनल्स अच्छी जोटा कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अरेंजमेंट एक्स्ट्रा जुडिशियल अरेंजमेंट गुरा अच्छी ट्रिब्यूनल भी जुडिशियल बॉडी बट दे आर नॉट judicial in the true sense of the term. They are quasi-judicial bodies. They deal with, they resolve disputes in a other way, not in a traditional manner. They are different from courts and they are subject specific. Tribunals are subject specific. Subject specific माने tax tribunal रे अन्य को matter decide कराई परिबनी. Administrative tribunal रे administrative service related matter decide करावो. तेरे से माने सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्ट्स आर नॉट सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्ट डील विथ ऑल मैटर्स
then there is a big difference between tribunal and courts. Anyway, but tribunals also are established to relax the burden on the courts. Courts माने जो overloaded है उचंदी बा से माने जो कुआ जाए कि justice is delayed, तेरे justice unduly delayed होची से जो delayed टे को कमेया पाई justice को accessible करिया पाई बा timely करिया पाई विभिन्न प्रकार arrangement कराई ची जंती हमरो लोक अदालत हैला कि family courts हैला कि fast track courts हैला सेमती ट्रिब्यूनल गुरा भी तैयारी कराई ची किंतु ट्रिब्यूनल माने इफेक्टिव होउनांती एतिपई जे अपील अगेंस्ट ट्रिब्यूनल्स लाइज टू द हाई कोर्ट आगुर सुप्रीम कोर्ट थिला बट ताको गोटे अमेंडमेंट करिकी सेटा को हाई कोर्ट रे करा जाईची किंतु सेतिपई ट्रिब्यूनल रो राय अगेंस्ट रे हाई कोर्ट रे बहुत सारा केस रहे तेणु जदि ट्रिब्यूनल मानकु प्लेनरी पावर दिया जिवो कि तांकु जदि सर्वश्रेष्ठ बा फाइनल अथॉरिटी दिया जिवो ताले ट्रिब्यूनल बी केसेस समाधान करिया पई समर्थन हेबे आ गोटे डिफरेंस होउची ट्रिब्यूनल रे केवल जुडिशियल बा जो लीगल क्वालिफिकेशन थिबा लोक जज बा अन्य किए छटी हेड होंतिनी एडमिनिस्ट्रेटिव लोक भी हेड हेई परिबे बा अन्य कैडर लोक भी ट्रिब्यूनल रो चेयरमैन हेई परिबे तो सेटा भी गोटे प्रोविजन अछि ट्यूट रे किंतु कोर्ट रे नॉन लीगल क्वालिफिकेशन वाला बट पर्सन्स हु डू नॉट हैव legal qualification cannot be appointed as judge of Supreme Court, High Court or district courts. So there are lot of differences. Okay, so this is all about your tribunal. मु briefly टिके तुमको idea दउची केते idea हमर दरकार भी सब विषय रे. Okay, तो एटा अब आंसर अब कोन B, आंसर B किंतु मन रखो tribunals रा कोन. Then how many times preamble of India has been amended so far? Preamble has been amended once in 1976. एटा हम बारंबार कहिलेनी 1976 रे अमेंड हैला. Okay, now we shall move to the questions. एटा A have answer. एटा देखि दो the option थिबो C रे. The sixth schedule of the Constitution of India pertains to the administration of tribal areas in which of the following states? 6 स्टेट रे 4टा स्टेट रही आसाम मेघालय मिजोराम एंड त्रिपुरा मुझे एटीएम स्क्वायर बेली पिलांकु कही एटीएम स्क्वायर रे मन रखिए एटीएम स्क्वायर आसाम त्रिपुरा मेघालय मिजोराम ये 4टी स्टेट रे ट्राइबल डोमिनेंट स्टेट तेणु ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रही आ अंडर रे मन रखिता डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल तैयारी करा जाए. डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल सब तैयारी करा जाए ट्राइबल कल्चर को बचाई ट्राइबल वे ऑफ लाइफ को प्रिजर्व करने एलोंग विथ डेवलपमेंट दरकार किंतु कल्चर को हत्या करिक नुह कल्चर को नष्ट करिक नुह तो से कराई केमती to pursue developmental activities without hampering or affecting the tribal culture and tribal way of life. So that is the things you have to remember, that why 6 schedules are there. एवं को schedule रे district autonomous council थाए सेटा होची that is 6 schedule रे प्रति जिल्ला रे district autonomous council मान तैयारी करा जाइते बोली प्रश्न आसे. Okay, so check your answers. Okay, thank you Amit for praising me. You are following the class. Thank you very much. We shall proceed to that is question number 17. But remember, what are the extra points we are getting? Okay, question deeper level को आसीबार संभावना अछि कारण एबे जे तो इंटरनेट आसी गलानी बा अन्य सोर्सेस अधिक आइ गलानी
तेणु क्वेश्चन सब गोटे अलग आंगल को नहीं जीव हमको धर आम 6 शेड्यूल जानी किंतु आम से जान ना डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल यही शेड्यूल गठन हुए कारण जो जो स्टेट 6 शेड्यूल एरिया से स्टेट मानक प्रति जिले में डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल गोटे थाए से तुम पाखापाखि 30 ना के 30 मेंबर्स था से 2/3 एमती गोटे अपॉइंटमेंट ट्राइबल लोक जमी रे नॉमिनेटेड हे क्या द्वारा ट्राइबल एमएलए मान द्वारा सब बहुत सारा प्रोविजन्स अच्छी 6 शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन उपरे ओके नाउ वी शैल मूव टू द दैट इज 17 whose salary is mentioned whose salary are not mentioned in the second schedule of the constitution of India बहुत सारा बही रे डिफरेंट कथा देइछि बट मु तुमको सैलरी उपरे गोटे डेफिनेशन गोटे कहली लिस्ट देली कार कार सैलरी अच्छी तेणु ए देखा कार कार सैलरी स्पीकर ऑफ विधानसभा सैलरी सेकेंड शेड्यूल अच्छी चेयरपर्सन ऑफ विधान परिषद सैलरी भी अच्छी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अच्छी चीफ इलेक्शन कमिशनर को दरमा 6 शेड्यूल रे करा जाय नाही ए जो हमर कोटा सेकेंड शेड्यूल रे करा जाय नाही सेति पे चीफ इलेक्शन कमिशनर इंडिपेंडेंस is to some extent compromised. Chief Election Commissioner is not as independent as Supreme Court and as independent as others because for some reasons and one of the reasons is that his salary are not charged expenditures. से तांको salary टा non votable नो तांको salary टा कमी दे जाई परिवो तेणु एते बड़ पदवीर अधिकारी obviously से chief independent body गोटे election commission and election is a very vital factor in a democracy किंतु तापरे भी despite these things election commission has not been made independent and its salary is not provided under second schedules so that is chief election commissioner question number 18 provisions relating to administration and control of scheduled areas and scheduled tribes is mentioned. So administration of control of scheduled areas in several states is better answer. Question ta tike modify kar dele bhalo hobo. Scheduled areas in several states. तो एटा हमरा 5th schedule state होबो 5th schedule state कथा हम कहली तुम मानू सब 5th schedule रे केतरा स्टेट अछंती 10टा स्टेट अछंती 10टा स्टेट मने रखिया पई मु तुमको भलो मेथड कहि जे कि हमरा जो 6 भाई राज्य अच्छा 6 ब्रदर स्टेट अच्छा 6 ब्रदर स्टेट भितर आमर आसाम ये जो कौन थे आंध्र तेलंगाना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान झारखंड ओडिशा नहीं कि हिमाचल प्रदेश एरा सब है 10टा स्टेट अच्छी तेणु 6 and 5th शेड्यूल रे सेवरल स्टेट प्रोविजन अच्छी आंसर ए हम व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट अंडर को सब्जेक्ट आछि से देखिए एग्रीकल्चर से स्टेट लिस्ट अच्छी एजुकेशन कनकरेंट फॉरेस्ट कनकरेंट तेन डीटा आंसर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तेणु से स्टेट गवर्नमेंट करेनी से ठीक अच्छे तो आंसर डी हम देन मैच दी फॉलोइंग रे अच्छी डिफेन्स यूनियन लिस्ट रे ऑब्वियसली आसीबो पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग कनकरेंट पुलिस एंड पंचायत राज सिस्टम स्टेट लिस्ट मुझे स्टेट लिस्ट उपर क्वेश्चन आनी नेक्स्ट क्लास रे सालिएंट फीचर उपर कारण ता उपर बेसी आसुची तेणु आम से भल भाव देखा से क्वेश्चन गुरा तो ये कौन हम ताल 132 आंसर ऑफ बी टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 22 at present but if the question is about originally how many languages were there then answer will be 14 okay so please check the answer
Okay, now we shall move to 22, question number 22. Okay, which schedule added 52nd Amendment Act added by 1985 in Indian Constitution? Which schedule was added by, not as, by 52nd Amendment Act 1985? So mu kotha houtile 10 schedule. Plane 10 schedule re anti defection law ura achi. Anti defection law जो दल बदल नियम, दल बदल विरोधी नियम सेटा होची एंटी डिफेक्शन लॉ जो एमएलए आउ एमपी मान केवल लागू है सेटा. तो सेटा जदि से माने इलेक्शन पर कोनोसी दल छाड़ीदेले से दल तांको निज दल छाड़ी के अन्य दल को गले किंबा कोनोसी स्वाधीन प्रार्थी जदि कोनोसी दल को परिवर्तन न कला एमती बहुत सारा प्रोविजन अच्छी. जदि कोनोसी मेंबर वोट्स अगेंस्ट द व्हिप ऑफ हिज पार्टी तेणु एमती बहुत सारा प्रोविजन अच्छी एंटी डिफेक्शन लॉ रे. रिमेंबर एंटी डिफेक्शन लॉ केवल पार्लियामेंट आउ विधान स्टेट लेजिस्लेचर पई एप्लीकेबल, सेटा पंचायत पई एप्लीकेबल लॉ, सेटा केवल पार्लियामेंट आउ स्टेट लेजिस्लेचर पई एप्लीकेबल. एवं डिफेक्शन को रोकिया पई कारण डिफेक्शन टा हम देश रे गोटे बड़ समस्या सृष्टि करथिला, सरकार बारंबार भांगी जाउथिला. सेति पई डिफेक्शन को सृष्टि करिया पई 10 शेड्यूल आर कराइछि एवं 10 शेड्यूल टा राजीव गांधी को समय आड होता है गोटे पॉइंट हुए. हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? ओके, 52nd अमेंडमेंट रे आमे कहिबा 10 शेड्यूल. व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? अच्छा, पार्ट 7 यूनियन गवर्नमेंट नो, पार्ट 7 एमती कहले अबोलिश हो जाइछि, पार्ट 6 टा स्टेट गवर्नमेंट एटा ठीक अछि, पार्ट भी टा यूनियन टेरिटरी नुहे, पार्ट भी टा यूनियन गवर्नमेंट हबो, पार्ट आईबी टा फंडामेंटल ड्यूटी नो, पार्ट आईबी ए टा फंडामेंटल ड्यूटी. तेणु आंसर हम बी. एवं यूनियन टेरिटरी गुरा पार्ट 8 रे अछंती. ओके, देन लिबर्टी मीन्स, लिबर्टी टाइप रो क्वेश्चन गुरा किछि मु बनैछि जोडा तुम पई यूजफुल हबो. तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, नियंत्रण अभाव हेले लिबर्टी आसे. जदि नियंत्रण रहिबो ताले आमे स्वतंत्र बोली कहि परिबानी. स्वतंत्रता आसीबो जेतेबेले आमे नियंत्रण रु बाहर रहिबा. सो दैट इज व्हाई इट इज राइटली कॉल्ड लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट. गॉट इट? सो सेमती अछि दर एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस माने स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर एनीबॉडी, दैट इज इक्वालिटी. तो से टर्म गुरा से मन पड़ोनी से आम पूर्वर प्राक्ट करते आराम से मन पड़ू. तार अर्थ तो आम लिटराली मीनिंग गुरा एत जल्दी आम मन पकई पारानी. तेणु से बारंबार प्राक्ट कले से गुरा आराम से मन रोटे गोटे मार्क भी बहुत इंपोर्टाट कौटी गली पड़ी गोटे क्वेश्चन जब पलि आसूची भी. ओके, तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट बी. अच्छा, आर देखिए कौन अच्छे आर्टिकल? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ द रिजर्वेशन ऑफ फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. प्लान क्वेश्चन सब देखा हो ठीक से. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा. प्लान यहाँ 334 रे अच्छे बी. अच्छा, 331 जो अच्छी भल लक्ष्य कर. 331 अंडर रे नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर्स, नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर्स बाय प्रेसिडेंट टू लोकसभा, जोटा कि 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020 रे ताको अबोलिश कर दिया. 340 टा होची कमिशन अबोलिश कर कमिशन तैयारी हो बोली कहि. 341 टा होची शेड्यूल कास्ट. 341 टा देखा होनथिबटी ऑप्शन डी रे अछि. 341 मन रखता. 341 टा होची एनुमरेशन ऑफ
शेड्यूल कास्ट को माने को कास्ट शेड्यूल हेबे सेटा अंडर आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट हेबे सेटा प्रेसिडेंट डिक्लेयर करंती तेणु 341 डील्स विथ the enlisting or enumeration of scheduled caste. Okay, so kindly take the answer, that is C. Okay, look at the answer please. Okay, so that is answer B. Answer B is correct, 25. Now we shall move to 26. Whose salary and allowances are not mentioned in the second schedule? एटा तो कले बदेबे अच्छा हाउ ठीक अच्छे देखी देबा टिके आउ की रहिला काले which salary and allowances comptroller auditor general अच्छी deputy chairman of राज्य सभा अच्छी गवर्नर्स अच्छी ये पुणी से ऑप्शन आइला डी ओके गवर्नर्स कथाटा भी कह भूल जाइए गवर्नर्स कथाटा भी रहा जो थे सैलरी तार चार्ज एक्सपेंडिचर से तो चीफ इलेक्शन कमिशन सब बड़े आंसर हाउ 26 आंसर है डी Who among the following is wrongly, which among the following is wrongly matched? Part XX, amendment to the constitution. Part 18, emergency. Part 17, official language. Part 6, Supreme Court. No, part 4 is Supreme, part 5 is Supreme Court. So Supreme Court is part 5. Article koi paribu? Article is 124 ru 147. ऑफिशियल लैंग्वेज कथा मु तुमको कही तीन प्रकार लैंग्वेज कथा कही 343 रे यूनियन लैंग्वेज 344 रे स्टेट लैंग्वेज 345 रे अच्छी हमर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लैंग्वेज जोड़ा कि इंग्लिश तो से सब पार्ट रे अच्छी एवं से लैंग्वेज कमिशन बा लिंग्विस्टिक कमिशन भी अच्छी माइनॉरिटी लैंग्वेज प्रोटेक्शन पे कराई तो बहुत सारा जिनस भितर अच्छी जोड़ा क्वेश्चन हो पार तो आम खाली ऊपर ऊपर प्रिपेयर हो गले हेनी आम टे इंटरनाली भी देखा पड़ो कौन आ भितर अच्छी कारण क्वेश्चन आउ कि देखुनी जे कौ पिला कौ लेवल परीक्षा होची कौन क्वेश्चन कौन परीक्षा पकई देती आमको टे डीपर लेवल जावाक पड़े से किसी क्वेश्चन मुझे कलेक्ट करी अपकमिंग क्लासेस आउरी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मुझे एंट्री करेबी ओके सो काइंडली गो ऑन keep on watching me, watching our classes. You will be definitely benefited for your upcoming examination, and it is only happens at Vanik. Remember, it only happens at Vanik. Okay, so part B re Supreme Court achi 124 to 147. Then which among the following parts of the Constitution deals with center-state relations? Center-state relation to data part. गोटे 11 पार्ट गोटे 12 पार्ट तेणु यहाँ 11 पार्ट रे जीव एवं 11 पार्ट रे हमर को रिलेशनशिप अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप एवं पार्ट 12 रे फाइनेंशियल रिलेशनशिप अच्छी एरा भी गोटे पॉइंट हुए बुझी पारछ ना नहीं तो लेजिस्लेटिव रिलेशन एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप टा पार्ट 11 रे अच्छी पार्ट 12 रे फाइनेंशियल रिलेशनशिप अच्छी एवं पार्ट 13 टा इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स तो एटा होची पार्ट एक्स बाकी पार्ट एक्स टा कोन शेड्यूल एरियाज जो अच्छी हमर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया जो हमें कहूचे सेटा पार्ट कोथरे एक्स रे अछि गोटे तो आर्टिकल तार अच्छी 244A 244A 244 शेड्यूल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन सब अच्छी 5th शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन 6th शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन केमती कौन करा जीवो सेटा सब अच्छी
एवं पार्ट 13 रे इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कथा अच्छी पार्ट 14 रे यूनियन एंड स्टेट सर्विसेज जोटा मुझे कहली तो आंसर हम बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स इज आर अमेंडेड व्हेन ए न्यू स्टेट इज फाउंड मु दीटा शेड्यूल कथा कहूली शेड्यूल 1 रे तार ना एंट्री हम शेड्यूल एन रे ना एंट्री हम जो राज्यटा तैयारी हम तार नाटा एंट्री हम शेड्यूल 1 रे से अमेंड चेंज है अमेंडमेंट माने कौन कौन सी आडिशन हो आबोलिशन हो बा कौन सी सब्सट्रैक्शन हो सेटा सब देखब तापरे शेड्यूल 4 रे राज्यसभा सीट केते तार पड़िबो तेणु दीटा जाक शेड्यूल अमेंड हम शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 अमेंड हम डी रे ओके सो काइंडली टेक ए आंसर that is D, B, D. Okay, so 29 is gone. Now we shall move to 30. Question number 30. Which among the following schedule come under part B of the Indian Constitution? Which of the following is not come under, doesn't come under part B? Part B रे किए रोन देखिबा पार्लियामेंट रहउची part B रे पार्लियामेंट रहिबो पार्लियामेंट जदि आर्टिकल आम नवा 79 रु 122 जाए से पार्ट बी रे अच्छी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी 148 रु लास्ट जाए अच्छी 151 जाए अच्छी इलेक्शन कमिशन टा 324 रे अच्छी सेटा इलेक्शन पार्ट रे अच्छी पार्ट 15 रे अच्छी अटॉर्नी जनरल भी 76 रे अथि अच्छी तेणु आंसर बी हबो बी टा 324 रे अच्छी एटा पार्ट एक्स बी रे अच्छी ताको एनालिटिकली देखिबो एनालिटिकली देखिले खाली क्वेश्चन आंसर कर दे कि ताको छाड़ दबन तो देखिबो एनालिटिकली को एंगल रे केते भीतर केते स्ट्रक्चरली को जाई परियो से ताले हमें प्रति क्वेश्चन को धरि परिबा ठीक से ठीक अछि गोटे हो दीटा हो पांचटा हो कि 50टा हो क्वेश्चन डीलिंग रो जदी एबिलिटी पळेला क्वेश्चन केमती डील करिवो सेटा ताले मास्टर माइंड हम से मास्टरपीस वर्क हम देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम नवंबर 26 1949 नवंबर 26 जो डेट ऑफ एनाक्टमेंट बा डेट ऑफ एनफोर्स जोटा हमें कहूँ डेट ऑफ अडॉप्शन से दिन तीनटा प्रोविजन कार्यकारी होता सिटीजनशिपटा कार्यकारी होता पार्लियामेंट फंक्शन करने कार्यकारी होता एवं इलेक्शन होगापाई देश में कार्यकारी होता पे इलेक्शन कमिशन जनवरी 25 तारीख 1950 मसीहा दिन या फंक्शन करने दि जाता से इलेक्शन प्रोविजनटा भी कंडक्ट कराइला तो सीटा से आंसर आम करवा कौन ना 1 2 3 सी फंडामेंटल राइट्सटा 26 जनवरी 1950 दिन कार्यकारी है So kindly take an answer. Now we shall move to question number 32. Match list with list 2. List 1 constitutional features, rule of law, directive principles, concurrent list, और suspension of fundamental rights. Rule of law टा हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आनीचे
डायरेक्टिव टा डीपीएसपी रु आनीचे जोटा हमर आयरिश रु, कनकरेंट टा ऑस्ट्रेलिया रु आनीचे एवं सस्पेंशन टा जर्मनी रु आनीचे। से ऑर्डर रे अछि 4321 4321 रे अछि 4321। So answer is B. Answer is B. Answer is B. Which of the following is incorrectly matched? Union territories 8 रे अछि, कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट IXA रे अछि, B रे अछि। तो IX B बी रो आर्टिकल केते कह 243 ZH रु 243 ZT। यूनियन एंड स्टेट सर्विसेज पार्ट XIV रे अछि, अमेंडमेंट्स टा पार्ट XX रे अछि। तेनो आंसर हो बी। एवं यू रिमेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अमेंडमेंट रे संविधान रे एंट्री हेतला, दैट इज 97th Amendment Act 2011 during the Prime Ministership of Manmohan Singh. Cooperative society became a constitutional body during the Prime Ministership of Manmohan Singh, and it was added by 97th Amendment Act 2011. ठीक अच्छी, बाकी सब ठीक अच्छी। यूनियन टेरिटरी तो 8टा अच्छी, 8टारू 3टा छाड़देले आउ समस्त हेड हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर। 3टा छाड़ दो, कौ 3टा को छाड़ू कह? लक्षद्वीप को छाड़ू, आमर लद्दाख को छाड़ू ना, लद्दाख रोचे से लद्दाख भी अच्छी। अच्छा, लक्षद्वीप को छाड़ू, चंडीगढ़ को छाड़ू, दादरा नगर डामन डीव को छाड़ू। ये 3टा को छाड़देले आउ जो 5टा रही तार हेड होती लेफ्टिनेंट गवर्नर, डेजिग्नेशन नाटा। तेणु जो क्वेश्चन पाइबू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेडेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, से 3टा भितर किए गोटे आंसर थी। लक्षद्वीप थाईपे, डामन डीव दादरा नगर थाईपे, ना पंडिचेरी थाईपे। ए सॉरी चंडीगढ़, चंडीगढ़ आई एम सॉरी दैट इज योर चंडीगढ़, दादरा नगर दामन डीव and Lakshadweep are not headed by lieutenant governors. All other union territories are headed by lieutenant governors. Then so that part 8 रे अछि। तो आंसर बी। एवं कहीदेली 97 Amendment Act 97th Amendment Act 2011 रे add is. Which of the following is true of a republic? It refers to a state which is ruled by the people and their elected representatives. Eta bhi hobo. It refers to a state in which the head of the state is elected. Eta bhi hobo. It refers to a state where the state is always hereditary. Hobo nahi. कारण जो राज्य रे राष्ट्र मुख्य, जो देश रे राष्ट्र मुख्य वंशानुक्रमिक, ताको आमे साधारणतंत्र कहि परिबा नाही। तेणु से इंग्लैंड एक साधारणतंत्र नुहे, जापान एक साधारणतंत्र नुहे, but India is a republic because head of the state is elected, foremost thing. And another thing is that they are ruled by the people's representatives. It will be a subsidiary secondary answer hobo. But 1 and 2 are correct. 34 is 1 and 2 are correct. So 1 and 2 टा कोटी अछि टी को देखि देबा, तापरे पुणी फेरिबा 1 and 2 C रे अछि। 1 and 2 टा C रे अछि। तो आंसर होबो कोन रे? C. तो our answer B or B or C. Okay. (34) answer is C. Now 35. Which of the following facts can be safely established by the preamble to the Constitution?
the time when the constitution was adopted and enacted, सेटा भी preamble लो हमें पाई परिबा. The ideal that were to be achieved, सेटा भी पाई परिबा. मो ideal गुरात कही ची कौन कौन? Yes, justice, equality, liberty, and fraternity. Okay? तो सीधा आइडियल शब्द. सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कही जोड़ा हम पांचटा देखले, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी कथार्थ होउची. पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी. सेति पई पूरा प्रीएम्बल आरंभ होला, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So we the people of India means that people are the sovereign or the main source of or the only source of authority in India. Today the prime ministers and chief ministers are there because people have given them power. If one day if the people take away their power, they will not be chief ministers and prime ministers. Prime minister. Okay. So answer is 1, 2, 3, 4. Part XXI deals with special provisions for certain states. Under Article 371F, which of the following states enjoy special status? এটা হচ্ছে সিকিম, এ. এটা হচ্ছে ডি. Okay. So part जोटा रहिला हमर 371 से आइडिया 371 रे महाराष्ट्र रहिला. महाराष्ट्र माने डायरेक्ट रहिले महाराष्ट्र, गुजरात आंकर स्पेशल प्रोविजन्स रहिछि. गुजरात रे दी जन स्टेट रहिले, ए रे नागालैंड रहिला, ए रे नागालैंड, बी रे आसाम रहिला, बी रे आसाम, बी रे आसाम रहिबो, सी रे मणिपुर रहिबो, डी रे आंध्र प्रदेश रहिबो, डी रे आंध्र प्रदेश. आ सब अलग प्रोविजन अछि, केते केते स्टेट अछि. आंध्र प्रदेश रहिबो, जी रे एफ तो कहली एफ जी, एच रे अरुणाचल प्रदेश रहिला. एमती टे देखिबो ताको नजर करिबो को स्टेट केमती अछंती. 371 रे सब इंटरनेट रे तुम पाखे अवेलेबल रहिबो. बही रे भी अछि. क्वेश्चन ए लेवल को जीवो, क्वेश्चन ए लेवल को जीवो बेरी भाबिता. तेणु आमे खाली जान देबा कि स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स को स्टेट को शेड्यूल रे अछि. एटा तो प्राय पिला कर देबे आंसर. सेटा अछि तो सेटा एक्सएक्सआई रे अछि. किंतु ता भीतर जो प्रोविजन अच्छी ताको भी जानिया दरकार ना. वी हैव टू नो दैट. सो फॉर दैट ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. एवं प्रैक्टिस तो सुपरफिशियल हबन. प्रैक्टिस तो जते डीपर हम तुम्हें सेते कॉम्पिटिटिव एग्जाम रो सक्सेस को टेस्ट करि परिबो. इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, जे कोनोसी भी इंग्लिश हो, सबु केस रे प्रैक्टिस टा गोटे डीपर रहा दरकार. सुपरफिशियल हेबनी. एवं ताकू गोटे स्ट्रक्चरली प्रिपरेशन करिवो. गोटे रिलेटेड फैक्टर रू कौन कौन टाणी ही पारिबो. स्ट्रेच योर आइडिया. ट्राई टू स्ट्रेच योर आइडिया. देन ओनली यू कैन बी एबल टू सक्सीड ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ओनली रीडिंग मोर एंड कंज्यूमिंग टाइम on or using or spending a lot of time on reading and just reading and reading is not enough. You have to structure your mind also. A voracious reader, those who qualify are not voracious readers. Some uses tricks, some uses their brain, minds,
So while preparing yourself, always prepare in a structural manner. Try to produce a question or bring out a question from each angle that you cover. Be a master in that line. Then only you can master, you can crack your coveted examination. Nobody can stop you from doing that. But if you going superficially or just reading whatever is written in the book, not using your mind, you are not opening your mind, you are not putting pressure on your mind to know the extra things that are inherent in a book, in a line, then you are not able to, or you are not supposed to crack exam. That is my perception also. It is also a fact. Okay, so while reading the special provision of states, ask yourself which states are given special provisions under this act, under this part. So I have written some names. The 371F, 371F is now under consideration. Some are stressing, some are demanding for the abolition of 371F, like the 370 that used to give special status to Jammu and Kashmir. So 371F को भी उच्छेद करिया पई बहुत सारा claims हेलानी. Okay, so it deals with special provision for certain states. So we shall now deal with question number 37. Question number 37. Which of the following amendment is not related to 8th schedule? Not related to 8th schedule means that your माने amendments जो हमें कहूचे तीनटा amendment रे 8टी language entry ହେଇची 8टी language कथा कहले मु कहि देबी से 8टी language कथा किछ असुविधा नहीं. गोटे सिंधी गोटे मणिपुरी गोटे कोंकणी वेस्ट कोस्ट भाषाटा कोंकणी आ गोटे नेपाली आ गोटे डोगरी आ गोटे सांथाली आ गोटे मैथिली सिंधी मणिपुरी कोंकणी नेपाली डोगरी Santali, Maithili, etc. Okay, these are the languages which were added by the 8 schedules. And which amendment? 21st 1967 is related to that. 71st 1992 added this article. That is 92nd also amend 4 languages. That is Dogri, Maithili, Santali, एवरा सब से ऐड करथिला नेपाली कोंकणी that is Nepali, Konkani, Manipuri were added by that, and 22nd Sindhi added. So 81st amendment is answer. Okay. Then word secular found enshrined in the Constitution of India means state protects equally. The state does not uphold any religion as state religion. Freedom of faith or worship is allowed to all people. The state makes no discrimination on the ground of religion. Sabuja ठीक अछि. तो 1, 2, 3, 4 अब देखि दबा आंसर कोठी अछि. 1, 2, 3, 4 answer D. Answer D. Kindly take a note of this. Yes, Santosh, you are right. So,
There are, I told you, 81st Amendment is not related to that. So there are 8 languages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acha. Then another is your 8. 8 is Bodo. So these 4 are added by 92nd, these 3 are added by 71st, and 1 are added by 21st. So these are 92nd Amendment Act 2003. So that is 1967, 1992 and 2003. Okay, is this correct? Now the word 39. Which of the following justice is not mentioned in the preamble? Acha, political justice, economic justice, social justice and cultural justice is not mentioned. Preamble. एमती तो कल्चरल जस्टिस आम दौचु कल्चरल जस्टिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी रिलीजियन जस्टिस एवं सब अच्छी किंतु प्रिएम्बल कथा से पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड 371A नागालैंड ठीक अच्छी बी फॉर आसाम इट्स नॉट मिजोरम बी फॉर आसाम ओके सो दैट इज द थिंग्स आंसर इज बी 371. Okay, answer is B. ठीक है. So next, that is National Constitution Day is observed on 26th November. B. How many states of scheduled areas mentioned in the 5th schedule? How many states? B. So 42 answer is B. Kindly take a note of this. Okay, so that is answer B and C. So 371B Assam, so it is not Mizoram. Mizoram is 371G. So that is Assam. Okay, now we shall move to the last part of the question, that is 42. How many states of scheduled areas mentioned in the 5th schedule? B. So I have told you the names of the states. Okay, B. Which of the following state is not mentioned in the 6th schedule? Assam, Mizoram, Manipur is not mentioned. C. But Manipur is mentioned in 21st Amendment, 21st part. Provisions for District Planning Committee, DPC, is provided under which part of the Constitution? 243 ZD रे District Planning Committee कथा कुआ जाइछि. District Planning Committee रो काम होला गोटे जिल्ला रे थिबा सहरांचल और ग्रामांचल को मिसेई की गोटे कंपोजिट कंसोलिडेटेड प्लान स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करे. सेटा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी रो काम. एवं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी रे उभय पंचायत और म्युनिसिपालिटी एरिया से जिला भितर जो मान थिबे तांको द्वारा निर्वाचित सदस्य सेही मानक मध्यरु फ्रॉम एमंग्स देमसेल्व्स आर इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव
that is called DPC. And another factor is that legislative DPC re, the DPC is the final authority in forwarding the plan. But DPC is mentioned in 243ZD. Then ko part hobo 243ZD. Then seta amaro article C, the part C IXA re answer hobo. Remember, it is not found mentioned in mentioned in the part ZD. Question kahi हाँ वो दो हाँ वो भूल ही जाओ. Okay, so this is called, that is part IXA. Okay, so IXA रे district planning committee आउट कथा भी कही दूँ तुमको metropolitan planning committee भी एथिरे अछि. metropolitan planning committee माने जोरा सब मेट्रो सिटी मुंबई एला दिल्ली चेन्नई एगुरा सब ता एरिया रे सब मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी गठन हुए एवं सेटा 243ZE सी भी से IXA म्युनिसिपैलिटी अछि. So I told you what is the objective. The objective is to send consolidated planning of the district to the municipal, to the state government. So 44 is C. Yes, you are right, Dinesh. Next 45. Which of the following provides protection and immunities to the president and governors of the states? President और governors को immunity को part रही परे miscellaneous part रे जोड़ा में miscellaneous part जोड़ा में कहूचे कौन part 19 रे एवं 361 अंडर रे प्रेसिडेंट और गवर्नर को स्पेशल इम्यूनिटी दिया है. ओके 370 362 रे पार्ट 19 रे 361 रे सॉरी 361 रे पार्ट 9 रे ए पार्ट 19 रे स्पेशल इम्यूनिटी दिया है चिका को गवर्नर को और प्रेसिडेंट को. दे कैन नॉट बी अरेस्टेड डिटेन्ड और नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम. Hence this part deals with miscellaneous parts. So 361 is related to, that is the immunities enjoyed by the president governor एवं एटा को part रे रहिला रे XXI sorry that is XIX 19 part. 360 टा इनऑपरेटिव आर्टिकल मन रखता है. इनऑपरेटिव माने एपर्यंत कार्यकारी हेनी. 360 जोड़ा हमें कहूचे 360 टा इनऑपरेटिव अर्थात 360 एपर्यंत इम्प्लीमेंट हेनी अर्थात फाइनेंशियल इमरजेंसी एपर्यंत बसी नाही. सेतिपई ताकू कुआ जाए इनऑपरेटिव. मन रखी दा टर्म गुरा मने रहिछि जदी भलो कथा जदि मने राई काइंडली रिमेंबर इट. दे आर कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इनऑपरेटिव आर्टिकल्स. 62 टा वैकेंसी रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट्स ऑफिस. ओके बाकी 251 सेंटर स्टेट रिलेशंस. द सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन आर प्रोवाइडेड. क्वेश्चन नंबर 46 पार्ट XI एवं XII टा फाइनेंशियल रिलेशंस एवं विथ रिलेशन टू प्रॉपर्टी मैटर्स आल्सो. And 21 is about special provision for certain states, and 14 is about union and state services. So answer is A. Legislations for giving effect to international agreements, that is 253. Article 253 under रे अच्छी
जदि कौन सी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है WTO एग्रीमेंट है कि कौन सी जातिसंघ सहित कौन सी भी एग्रीमेंट है जोटा कि समस्ते पालन करने उचित ताकू इफेक्टिव करने पार्लियामेंट रे लॉ तैयारी करा जाई पारे एवं सेटा को लेजिस्लेशन कहती सेटा 253 आर्टिकल रे पार्लियामेंट को से पावर दिया टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एवं सही XXI रे इटा अछि. Okay, so kindly take the answer please. Okay. Yes, so that is right. Yes, Santosh, that is 61 deals with the impeachment of the president. Very good. So, Santosh, okay. So now 48. The provision to conduct superintendent and direct elections to parliament and state legislature is provided in. The provision to conduct superintendent and direct elections to parliament and state legislature is provided under Article 324. That is in part XB. 325 is the delimitation or the constituency. 326 is the right to vote or deals with the voting rights. 330 it deals with the related to the provisions of the SC/ST. Okay, so for 48, 49, which part of the constitution is sometimes referred to as recycle bin of the constitution? The last part, that is XXII, 22, number D. Okay, and number 50, so that is emergency is a subject matter of part 18B, part XX is amendment, part 16 is certain classes, and part 12 is finance and property. So with your strict attention, I have completed 50 questions today related to parts and schedules. There are other important questions too. We cannot say which questions are important, which questions are not important, because any question can be important, any question can be possible in any examination you are facing. That is not the case. Case is that we have to be objective in our approach while reading and always focus on what questions you are gathering from whatever you are reading. That is the most important part of your preparation. We shall be bringing new chapters, salient features of Indian Constitution with lots of questions for you, and I am happy that you people are appreciating our effort. You are giving your nice comments. I have seen through or gone through your comments. None of you is dissatisfied. That gives me utmost pleasure. Your satisfaction is my motto, and I shall spend my constructive time in helping you, in bringing you more and more advanced questions and appropriate questions with accuracy and results. I hope that all of you are doing well. So leave everything aside, always focus on your goal, because a goal-oriented man is a real man. So you will have your life, you will have entertainment, you will have enjoyment, lots of things in future, but first crack a job. And for this purpose, Vanik is always standing by you, and throughout the night, throughout round the clock, it is a friend, philosopher, guide to all of you. Okay, so rely on us and put faith in us, and
proceed with a high speed to achieve the goal. Okay, in the next class, we shall be bringing new chapter with new thoughts and new questions. Okay, thank you very much for being with me for a long duration of time, 2 hours. I am really grateful to all of you, and thank you very much again to all of you.